from his exile back to his beloved city of Kashi, Lord Brahma made a Shivling from sand and performed 10 consecutive Ashwamedh Yajna. As a result, Lord Shiv was pleased and he appeared on this ghat, which came to be known as the Shashwamedh Ghat. Every year during the month of Shravan, lakhs of devotees of Lord Shiv come to this ghat from all over India to take Ganga Jal and offer it at Shiv Dham. It is believed that the Kavariyas are protected during this extremely difficult barefooted journey by Mahadev himself. दशाश्वमेध घाट काशी का प्राचीनतम घाट है। मत्स्य पुराण के अनुसार काशी के 5 प्रमुख तीर्थों में दशाश्वमेध घाट को प्रमुख मान्यता हासिल है। पुराणों के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव को निर्वासन से वापस बुलाने के लिए रेत से शिवलिंग बनाकर लगातार 10 बार अश्वमेध यज्ञ किया था। ब्रह्मा जी के यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान शिव इस घाट पर प्रकट हुए थे। इसी कारण से इस घाट का नाम दशाश्वमेध हुआ। कांवरिये सावन में इसी घाट से गंगा जल भरकर शिव धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। माना जाता है कि इस घाट पर आने वाले सभी कांवरियों की रक्षा और उनकी यात्रा की निगरानी भगवान शिव स्वयं करते हैं। Manmandir Ghat was constructed in the year 1585 by Man Singh, the king of Amer in Rajasthan. It was earlier known as Someshwar Ghat. In 1730, Maharaj Jai Singh established an observatory on this ghat. Jai Singh had also built the Jantar Mantar in Delhi and Jaipur. This observatory has 4 astronomical instruments which are still in good working condition. They shed light on the progress of our country in the field of astronomy. This observatory was rebuilt in the year 1850 and it was subsequently renovated by Rajput rulers of Jaipur in 1912. Manmandir Ghat has several important temples including Sthalgat Vinayak, Rameshwar and Someshwar temples, which have been constructed in the Rajasthani style of architecture. Out of these, the Someshwar Lingam is an image of the Shivling in Somnath temple in Gujarat. It is considered one of the 9 famous Jyotirlings of India. मान मंदिर घाट का निर्माण सन 1585 में कराया गया था, जिसे आमेर के राजा मान सिंह ने बनवाया था। मान मंदिर घाट को पहले सोमेश्वर घाट के नाम से जाना जाता था। महाराजा जय सिंह के द्वारा 1730 में यहाँ एक वेधशाला की भी स्थापना की गई थी। राजा जय सिंह ने ही दिल्ली और जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण कराया था। इस वेधशाला में 4 खगोलीय उपकरण हैं जो आज भी अच्छी हालत में हैं और काम करते हैं। यह उपकरण भारत में खगोल विज्ञान के ज्ञान की स्थिति पर प्रकाश डालते हैं। इस वेधशाला का पुनर्निर्माण सन 1850 में करवाया गया था और सन 1912 में जयपुर के राजपूत शासकों ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। मान मंदिर घाट में कई महत्वपूर्ण मंदिर हैं, जिनमें सूर्यदत्त विनायक, रामेश्वर और सोमेश्वर मंदिर शामिल हैं। Manikarnika Ghat is also known as Mahashamshan, and it is the only place in India where cremation takes place 24 hours daily. It is said that one can always see a burning pyre in Manikarnika Ghat. In Sanatan Dharma, this ghat is considered to be the purest location for performing the last rites of an individual. According to the Purans, Lord Shiv had blessed Manikarnika Ghat with eternal peace. Therefore, whosoever is cremated here attains salvation. Lord Vishnu had created a pond on Manikarnika Ghat with his Sudarshan Chakra to be used by Lord Shiv and Devi Parvati to take bath. It came to be known as Chakra Pushkarni Kund. While she was taking a bath, the jewel in Devi Parvati's earring fell into the pond.
Therefore, this ghat came to be known as Manikarnika or the jewel of the earring. मणिकर्णिका घाट को महाशमशान के नाम से भी जाना जाता है। इस घाट की विशेषता है कि यहाँ चिता की अग्नि कभी शांत नहीं होती है। यहाँ हर समय किसी न किसी का शवदाह हो रहा होता है। सनातन धर्म में इस घाट को अंतिम संस्कार के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। मणिकर्णिका घाट को भगवान शिव ने अनंत शांति का वरदान दिया था, इसलिए जिसका भी यहाँ अंतिम संस्कार किया जाता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव और माता पार्वती के स्नान के लिए यहाँ भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से एक कुंड का निर्माण किया था, जिसे चक्र पुष्करणी कुंड के नाम से जाना जाता है। स्नान के दौरान माता पार्वती का कर्णफूल कुंड में गिर गया था, इसलिए इस घाट का नाम मणिकर्णिका घाट हुआ। The stretch between Asi confluence and Panchganga is known as Shiv Kashi, and the stretch between Varuna confluence and Panchganga is known as Vishnu Kashi. The point where Shiv Kashi and Vishnu Kashi meet is the Bindu Madhav pilgrimage site, which is one of the 5 main pilgrimage sites of Kashi. According to Skand Puran, when Lord Vishnu came to reside at the Panchnath Tirth, he saw sage Agnivindu one day who was offering prayers to him. Pleased with his devotion, Lord Vishnu declared that he will forever reside in Kashi in the form of Lord Bindu Madhav. At one point of time, the popularity of Bindu Madhav temple was at par with the Jagannath temple of Puri. In his first year of rule in 1659, Aurangzeb destroyed Bindu Madhav temple, also along with Kashi Vishwanath temple, and constructed a mosque at the same place. The idol of Lord Bindu Madhav was relocated to a nearby place and a small temple was erected. The tradition of celebrating Dev Dipavali, the globally famous festival of Kashi, began at Panchganga Ghat in 1985 by lighting 1001 lamps of the Hazara Deepak. According to the Purans, on the day of Kartik Purnima, Lord Shiv destroyed the demon known as Tripurasur and freed the gods from his terror. After that, all the gods came to Kashi with Mahadev and celebrated his victory by lighting lamps. Therefore, every year on Kartik Purnima, Dev Dipavali is celebrated in